Welcome to today's class, and today we are going to start with the second subunit of this model, that is on women and work. And in this module we will be discussing what is the position of women in the workspace or in the world of work, and how the two gender groups we find are positioned in this world of work, and how do we treat our women. These are the common things that we see, and let us bring them into the forum of our discussion and let us think over them. Are the practices that are related to women in our workspace is equal or not? Do we have some ethics when we take our women to work, and what are the constraints that actually we put on women, and all these things, and whether the human rights of women are well protected, those who are working or in their workplace, and all these things we will be discussing in today's class. So, if we ask about what is work, then many of us say that any remunerated job is work. That we will be coming to a later stage. So, in our own surrounding we see that many women have come to work, and if you look at my generation and if you look at your generation, and if I look back to my parents' generation, with 3 generations, and on generation basis women in a great number have come and have joined the workforce. Today we find many women at work. You must be seeing, तुमे माने देखुथुबो तुम्हारी परिसर रे प्रत्येक दिन पेपर रे पढुथुबो, तुमर निज घरे निज गाँ रे निजर जोठी तुमे सहर रे रहुच, जो जगह को तुमे जाउच सेठी देखुथुबो तुमर अनेक थिबे नारी जो माने कि कर्म क्षेत्र रे तुमे तांको देखुथुबो। कारण जदि आमे गाँ रे देखुचे, आमे देखुचे बहुत नारी एबे भी तुमे गले, you can see them as agricultural laborers in the field. You go to a hospital, there you see they act as nurses, both doctors, they also are women. And if you come to a construction site also, you find women as engineers. Go to an industry, you will find engineers today, and the IT sector, as you know, is flourishing with many women. And the next you can see as your teachers, many of your teachers are also lady teachers. There are bankers who are also women, and even you have seen pilots, you have heard about pilots, scientists who are women. So, but the question arises, what is their number? तांकर संख्या केते? भारतर समग्र भारतरे आमर बा समग्र विश्वरे केते होची वुमेन मानकर भाग एवं परिसंख्यान रे, एवं केते नारी प्रकृत रे कर्म क्षेत्र रे अंशग्रहण करिथांती बा जाहाको आमे कहू paid employment re achanti. This is not the story. I talked about you about the agricultural laborer. I talked to you about you the nurses, doctors, engineers, teachers, scientists, pilots. Their number is always limited. Semanankara sankhya hochi sabu bale simita. This is not the story of all the women. Every woman of the country or the world is not a working woman as per our enumeration. जदि आमे संख्या को नबा, जदि आमे परिसंख्यान उपरे पर्यवेसित करिबा, आमे देखिबा बहुत नारी मानकर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पुरुषों ठारू जथेष्ट कम। आमे देखिबा केवल काहे कि एटा कम, आमर प्रकृत रे तुमे तुम निज को पचार, तुमे तुम घरे देख, तुम माँ माने कौन काम करती नाही कि? डोंट यू थिंक दैट योर मदर्स डू वर्क? They do work. Not only your mothers, your sisters, your grandmothers, they all work. But do we call that work as employment? केवल आमे एम्प्लॉयमेंट कहिले नियुक्ति को बुझे थाउ, नियुक्ति कहिले पेड वर्क को आमे केवल नियुक्तिर डेफिनिशन बा संज्ञा दे थाउ. When work
actually fetches some amount of money and in return, that is known as work as per our definition. किंतु जदि आमे प्रकृत देखिबा आमर प्रत्येक दिनर दैनंदिन जीवन रे माँ माने यथेष्ट काम करि थांती किंतु से काम पाई आम घरे जो माँटीए आम पाई काम करे आमे ताकू पैसा दऊ कि किंतु पैसा दौनी से काम करे सी वर्क्स but that work we never is paid, and therefore we say that participation of women in paid jobs is called only employment, because that is our definitional part where we say that paid jobs are employment. Women works, but so far as employment is concerned, their number drastically declines, and the share of women is not the same as that of the men in the employment market. और जदि भारतर संख्या आमे देखिबा भारत रे धीरे धीरे नारी मानकर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत बहुत कमी चली ची. So now we are telling in India that the labor market is taking a very masculizing trend. It is not female friendly in character. एटा मु कहू नाही, एटा होची हमर ILO जो ILO रो होची आमर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तार परिसंख्यान रु जना पड़ी जे भारत रे नारी मानकर कार्य करिबार बा जोटा को आमे कहूचे एम्प्लॉयमेंट बा नियुक्ति यथेष्ट कम तांकर पुरुष मानक तुलन रे. एठी काहे कि हमर एटा आसीची कारण जदि आमे समस्त निजको पचारिबा नारीटीए काम करे कि नाही, नारीटीए बेसी काम करे पुरुष ठारू आमे जदि देखिबा. गोटे दिन रे तुमे तुमर घरे थिबा तुमर माँ किंबा तुमर जे बुढ़ी माँ किंबा तुमर भौणी तांकर कौन कौन सकाळू उठिबाठू राति जाए से कौन करती तार गोटे हिसाब रख. कौ काम करती केते समय नियंती एवं तुमे की काम कर एवं जदि तुमे पुरुष होइतबो छात्र मान को कहूची तुमे कौन काम कर तुम बापा कौन काम करती तांकर कौन कौन केते समय नियंती देख. समय हिसाब रे देखिले तुमे देखिबो नारी माने यथेष्ट अधिक काम करथांती. If you look at the number of work, the multidimensionality of work, women are more multitasking. They do a lot of work in comparison to their male counterparts. किंतु आमे सेति गोटे डिफरेंशिएट करे वर्क कर्म एवं नियुक्ति विषय. वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वी मेक इट इज नॉट वी बट आवर enumerations, national enumerations make a differentiation between what we are calling as work and employment. जोटा कुछ श्रम काम करिबा द्वारा श्रम उभय विनियोग करती किंतु पारिश्रमिक भित्तिक श्रम होची केवल एम्प्लॉयमेंट जो थरे कि किछि व्हेन वी गेट सम पेमेंट for the work that is taken as employment, but the other works are not counted as employment. They are unpaid work. जहाँ को आमे कहूचे जो थरे कि किछि पारिश्रमिक न थाए. आमे सब बळे एठी प्रश्न करिबा जो माटीए काम करूची आमे कौन कहिबा जे नाई से किछि काम करू नाही से केवल कौन करुची ना से आमको से तार जोटा दैनंदिन काम एटा तो मार काम एटा तो स्त्री लोकर काम आमे सेया भाबिकिरी आमे ताको कहू से राति अधरू उठे एवं परिशेष राति सबुठ डेरे सोया पे जाए आमे कहू सेटा काम रे गणा नुहे कारण सेथिरे से किछि पैसा तो रोजगार करनी केवल रोजगार क्षम लोक आ जो एतबेले आमे रोजगार कथा हिसाब करू आमे जे रोजगार करे देखिबो छात्र छात्री माने तमे you can imagine those who actually bring some money to the family, they are given a high status. We actually care for them, and those who actually do not generate money for us but they generate jodi ame dekhiba without the mothers this money cannot be generated. At the foundation of the generation of money lies the worth and the work of a mother. Then men and women do participate equally in the labor market. Jodi ame dekhiba
प्रकृतरे उभय ही काम करती अराउंड द वर्ल्ड इफ यू सी ओनली 47% ऑफ वर्किंग एज वीमेन पार्टिसिपेट इन द लेबर मार्केट सारा विश्व रे जमा 47 भाग जो वर्किंग एज वीमेन जितेबाला कि से माने कर्मठ होबा कथा जमा तांको गणा जाए जे से माने काम करती बा दे वर्क बोली तांको गणा जाए कंपेयर टू अराउंड 74% जस्ट अपोजिट 74% मेन काम कला बेले वर्किंग एज रो ओनली 47% women and this is the figure for the world I am telling and this is given by your United Nations and the commonly held idea is that women are meant for chula and chauka आम मनरे सबुबले गोटे धारणा रही जाई थाए जे गोटे स्त्री लोक ही घर पाई एक्चुअली उद्दिष्ट इज इट सो गोटे स्त्री लोक जार कौन तार जी अंतर्निहित शक्ति रही पोटेंशियल डू वी गिव अ स्कोप टू हर टू एक्चुअली फ्लोरिश एंड टू यूज इट या द्वारा कहार क्षति हुए देशर क्षति हुए जातिर क्षति हुए समाजर क्षति हुए बिकॉज वी फेल टू टैप द employment potentiality the work potentialities of the woman कारण आमे मूलरु गोटे बद्धमूल धारणा नहीं थाउ नारीटीए जन्म होइछि माने ताकू आमे घर काम रे निपुण कराइबा we will develop we will capacitate her we will develop her competency through socialization only for the family तेनु ए जो द्वारा तार काम होछि कोन हमर या भितरे बहुत गुडे डीप रूटेड कस्टम्स रहिछि ट्रेडिशंस रही प्रथा रही डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आम भिन्न धरण गोटे पुओ को एवं गोटे झील को ट्रेन करूँ जदि मुझे प्रश्न पचारुची जदि आम गोटे झील को पुओ भाया पाठर सुजोग दबा ताकू आम भल पाठ पढ़ा वंचित करवा ना ताहले कौन झीलटे भल पाठ पढ़ी भल चाकरीटे करना सबू झील भितर से शक्ति रही जहाँकि पुओ मान मध्य रही किंतु आमर जो प्रथा चलनी अनेक जगह जोगु आमे तांकु सेही सुजोगरु वंचित करिथाउ जदि आमे आज कहिबी आमे गोटे जानतु आपण गोटे गाँ को किंबा अनेक समय झील माने कौन करती ना सेमानकु स्कूल जिबारु मध्य वंचित करा जाए किंतु कहीं आमे जेतबेले पचारू एते सुविधा सरकार देइचंती मिड डे मील देइचंती ड्रेस देइचंती साइकिल देइचंती तथापि किंतु एहा होची केवल आमर से जो संवेदनशीलता झील मानक पाई नाही आमर से सचेतनता नाही जे झीलटीए मध्य पुओ भलिया भी निजको खूब सुंदर भाबरे गढ़ी तोली परिबो से भी मध्य काम करी समाज को से किसी प्रोडक्टिव ये रे निजको नियोजित करि परिबो तेणु आमे सब बेले भाबू सेथिपाई ताको वंचित करू माँ माने अनेक समय जेतेबेले बिल काम को जाती बा दूर को बण को जाती से माने सब बेले झील मान कहती जे तू पाठ न पढ़ी घरे रह कारण ताहा तू पुओ को धरिबू कि छोट पिला मान को धरिबू घरर काम करिबू पोखरी रु जाई पानी आनिबू किंतु एई जे समय रे से माने काहे कि पुओ टिके तो करंतिनी इज इट नॉट अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दैट वी प्रैक्टिस एंड वी गिव डिफरेंशियल ट्रेनिंग एंड स्किल टू द बॉयज एंड टू द गर्ल्स लेबर मार्केट बा आमर जोटा कर्म संस्थान कर्म मार्केट रे जो बाजार रे जो रकम रो स्किल दरकार हुए ताकू आमे केबे हेले सेही टाइप रो प्रशिक्षण सेही टाइप रो शिक्षा झील को दे न था अनेक समय पुओं संगे अवश्य जुग बदली जाइछि बहुत जगार सचेतनता सृष्टि होइछि बहुत बापा मांकर मध्य माने मनोवृत्ति रे परिवर्तन हेलानी से माने पुओ मानक भली झील मानक मध्य शिक्षा दउचंती तथापि अनेक झील पाठ पढ़ारू वंचित अछंती कारण तांकर जेतेबेले कौन हुए तांको आमे शिक्षा दान रे आमे तांको वंचित करू तांको स्वास्थ्य सेवारू अनेक समय वंचित करू तांकर स्वास्थ्यटा को आमे एते गुरुत्व देउ नै तांको जो खाद्य दिया जाए न्यूट्रिशन झीलटे बोली आमे भाबू तार किछि दरकार नै पुओटे जीव खटिबो जमी रे पुओटे जीव बाहरे काम करिवो पुओटे
आमे तार एनर्जी तार शक्ति तार हेल्थ को आग आमे प्रायोरिटी दो एंड दीज टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस एक्चुअली गोटे बहुत टेंडर एज रु वुमेन रो कैपेसिटी टू वर्क को भी डिटर करे आउ आमे जदि पचारिबा प्रत्येक झील एवं पुओं को यही श्रेणी रे पचारिबा समस्ते चाहती समस्तंकर स्वप्न थाए एवरीवन एस्पायर्स अ गुड लाइफ एवरीवन एस्पायर्स टू डू सम वर्क एंड टू गेट अ पेमेंट एंड आम से एम्प्लॉयमेंट कथा जो समस्ते निजुक्ति चाहती आम किंतु बहुत समय प्रिभेंट करे से आम ये गोटे सामान्य एग्जांपल एठी देबी आई वांट टू गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल हियर हायर एजुकेशन रे इफ यू कम टू द फील्ड ऑफ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेठी झील मानकर संख्या पुओ मानक तुलन में यथेष्ट कम कारण आमे भाबु आउ एई जो स्टेम आजिर जो बजार हेछि माने ग्लोबलाइज जगतीकरण परे देर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर द पीपल हु आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्टेम फील्ड दे गेट एन इजी एम्प्लॉयमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट but we prevent girls to go for science technology engineering and maths कारण आमे तांको कहू this is not your field you can go for liberal social sciences तेणु सेते बेले तांकर नियुक्ति रे प्रॉब्लम हुए आमे काहे कि कहू बहुत समय अनेक घरे कहा जाय साधारणतः मु कहूनी सहर रे थिबा घर मानकरे यही सबू समानता आसीगलानी से माने जानुचंती जेपरी पुओटीए पढ़ी पारिबो सेपरी झीओटीए मध्य पढ़ी पारिबो तेणु झीओ पुओ भितर प्रकृत रे से माने धीरे धीरे दूर जो थिला वैषम्य ताहा दूर होउची किंतु बहुत जगह गाँ गंडारे जोठी होउची सीमित आय गोटे सीमित आय मध्य रे व्हेन द इनकम ऑफ द फैमिली इज लिमिटेड एंड देयर इज अ नीड दैट द बॉय और द गर्ल देयर इज अ क्वेश्चन whose education the family will support. The family first of all comes to support the education of the boy. Then let us now discuss, let us now think that is it a good practice even if a girl is a very good student, even if the girl has her own dreams, even if she has got her own aspirations, we never allow her to go for a good education. And जेतेबेले good education ते दिए नाई good employment कथा आमे भाभी पारे ने जेतेबेले good employment न पाए सेतेबेले आमे empowerment कथा भाबीबा की परी. So education, employment, empowerment, they are all related. Another thing comes here, the question of value, because both are children, both have got rights as as child rights they should enjoy, they should enjoy human rights, and their human rights suggest that they have their right to earn livelihood, they have their right to work. किंतु आमे बहुत समय प्रिभेंट करूँ ये जो ह्यूमन राइट को प्रिभेंट करूँ यहाँ ठीक कि भूल आमे चलतु चिंता करवा. आजिर छात्र छात्री हिसाब से तुम्हें कह जे एटा करवा ठीक होचे कि आउ जदि आमे देखिबा पर्टिकुलरली घरर जो केयर बर्डन किए घरर एक्चुअली जत्न नब जो आमे वी मेक अ डिफरेंस ऑफ द इकोनॉमी इनटू टू टाइप्स. वन इज द केयर इकोनॉमी, अनदर इज द प्रोडक्शन इकोनॉमी. आमे कहू जे आमर अर्थनीति दुई भाग रे विभक्त, गोटे होची जत्न घरर जत्न एंड द केयर इकोनॉमी इज अनपेड एंड द प्रोडक्शन इकोनॉमी इज पेड इन कैरेक्टर. आमे नारीटी को सबु बेले केयर इकोनॉमी रो परिसीमा मध्य सीमित करू. वी ट्राई टू कीप हर कन्फाइंड टू द बाउंडरीज ऑफ द केयर इकोनॉमी जो थरे की तहे बहुत समय से माइग्रेट कर पाने. आज जदि आमे देखिबा जो माने माइग्रेट करूचंती, यू लुक एट द migrants, many migrants leave their wives and children at home. Kaiki na because the wife takes care as a single headed household, she takes care of the elderly, she takes care of the children, she takes care of the sick and the diseased persons of the family, she takes care of the pets, and the man only has migrate. Don't you think that the woman has the propensity to migrate? गोटे स्त्री लोक मध्य जदि माइग्रेट करि परिबो से मध्य भल नियुक्तिर सुजोग पाई परिबो, से मध्य तार रोजगार क्षम हेई परिबो.
किंतु आमे सेथिरु वंचित करू कारण कहू जे तू केवल रहिचु एई जत्न नबा पई घरर एवं सेहिति पाइका बहुत समय रे आमे तांको सेही सुजोग ही देउ नाही जेतोले माइग्रेशन कथा उठे प्रथमे देखिबे पुरुष मानक संख्या माइग्रेशन ने यथेष्ट अधिक नारी मानक ठारू कारण आउ सेही माइग्रेशन पाई दे गेट बेटर opportunities for your earning and better opportunities for employment where the woman doesn't get that opportunity for drawing an income for herself तापरे गोटे होची वर्क चॉइस नाउ we will come to the freedom of choosing one's work when a girl tells that I want to become a pilot many families even families like us who are very much conscious sometimes frown upon it आमे भाबू पायलट कहीं तू हबू तू झियो पिला तू एमिति चाकरी करिबू where your work life balance can be maintained and when a boy talks about piloting we become very excited we become enthusiastic we go on telling it outside जे आम पुओ चाहूँ गोटे पायलट हम तेणु यही जो डिफरेन्स टा आमर हुए कारण फ्रीडम ऑफ चॉइस गोटे झियो ता निज चॉइस रो जॉब टे नबा भी डिफिकल्ट बहुत समय हो पारे यू माइट हैव हर्ड मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स मेनी ऑफ योर रिलेशंस मेनी ऑफ हैव left their jobs because of their family. So even if they have the capacity to work, they have the willingness to do work, even having the skills to do the work, even having the training and education for the work, many girls fail to take up the job on a long run basis बहुत दिन धरी से माने सही रकम चाकरी रे करंतिनी because work has got its own demand and as family members बहुत समय रे आमे कोन सामानक संगे रे जदि मोर कौनसी झीटीए चाकरी करुच्ची मोर तार आमे घरर पुरुष लोक मानकु मोर मान छात्र मानकु कहूची सेमानक मध्य दायित्वबोध रही भौणटी चाकरी करची मो भौणी को किछि सहाय्य करबी घर काम आमे दी जण करि परिबा किंतु आमे कहू ना घरटी संपूर्ण तोर संपूर्ण घर काम कला परे जदि तते सुजोग मिलुची तू जाई पारु काम को तेणु दिस ऑप्शन वी आर बाय दिस ऑप्शन वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट हर चॉइस ऑफ जॉब एंड ताकू जदि भी जेतबे चाकरी आछी विथ डिग्निटी गोटे आमे तार वर्क स्पेस रे ताकू जो डिग्निटी दवा कथा सेटा आमे विचार करिबा whether we give that dignity to the women in the workspace or not कारण आमे बहुत समय रे देखू जो कर्म जो एनवायरनमेंट परिवेश जो नारी माने भी काम करिया पई जाती whether it is soothing for them or not बहुत समय रे आमे भाषा अभाषा रे तांको कथाबार्ता करिथाउ बहुत समय रे आमे एक्सप्लॉइट करिथाउ जोथ पाइका कि कर्मस्थली रे से निजको सुरक्षित मने करेनी सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर एंड वुमेन इट इज आवर एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज अगेन we should develop good values because she is just like a worker with us she is just like a friend and we together will cooperate to make the work environment better and to make the production maximum so we think that no she belongs to another gender group बहुत समय रे आमे तांको पछरे कथा वार्ता करू तांको सामना रे अशालीन भाबे कथा वार्ता करू तांको एक्सप्लॉइट करि थाउ जहा फल रे कि बहुत झियो मध्य काम चाहिले मध्य काम को आसंती नाही आ मेजॉरिटी जदि आमे देखिबा आमे बहुत वल्नरेबल कंडीशन बहुत लोकंकर झियो मानकर बा बहुत स्त्री लोकंकर अनेक गुड़ी आवश्यकता रही कहार स्वामी जदि रुग्ण अवस्था रे अछंती कहार घरे जदि आर्थिक संबल दरकार होची अंडर वल्नरेबल कंडीशंस दे आर वर्किंग विथ अ वेरी लो वेज बहुत कम पैसा रे आमे तांको एक्सप्लॉइट करू एवं से माने राजी ही जानती एवं दैट इज नॉट द राइट kind of environment work environment to encourage women to work एठी मु वंदना शिवांकर गोटे कथा कहबी वंदना शिवा होचंती जने बड़ फेमिनिस्ट राइटर एंड वंदना शिवा टॉक्स अबाउट स्वेट शॉप women are into sweat shop
स्वेट शॉप होची जोठी की कंडीशन अति खराब झाड़ुआ कंडीशन जोठी सृष्टि होता है एंड वेरी फ्यू वुमेन गो टू वेरी टफ पोजिशंस where they get a very white collar job and they are into a very cozy environment. Sweat shop concept 1850 मसीह इंग्लैंड रे ही बाहर थिला जो थे कि जो जगार से काम करती जो परिवेश तार अवस्था अत्यंत खराब इट इज़ वेरी पुअर एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल एंड इलीगल वर्किंग कंडीशन लीगल आमर लॉ कहे जे परिवेश आम जो परिवेश रे काम करुचे द वर्क एनवायरनमेंट नीड्स टू बी गुड एटलिस्ट सेमानकर ब्रीदिंग स्पेस थिबो सेमानकर बसा उठा करबा पई थिबो आउ वेंटिलेशन भल थिबो एवं किछि तांको ब्रेक हो नथिबो जॉब रे किंतु तांको बहुत समय रे एपरी चाकरी मिले नाही आउ आमे पर्टिकुलरली वुमेन मानकू आमे एई रकम रो स्वेट शॉप रे बहुत समय रे काम करूथवार देखू ए जो स्वेट शॉप रे काम करी करी सेमानकर बदे खूब कम पैसा पांती शारीरिक मानसिक भाव रे सेमाने एक्सप्लॉइटेड दे गेट एक्सप्लॉइटेड एंड दिस इज नॉट द राइट एनवायरनमेंट वेयर women need to start their work. In the next class we will be continuing with this what is the work place position of the women and what will be our ethical concerns in it and how we will bring a change in the existing situation by taking some ethical developing some ethical values among ourselves so that we can make the work environment a gender friendly environment for both men and women.